हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। केमती अछंती आपण माने? तो हमर मेंस टेस्ट सीरीज 26 तारीख रु स्टार्ट हेची। तो 26 तारीख जो टेस्ट हेची तार डिस्कशन आज करबा। 26 अक्टोबर कि संडे गला काली टेस्ट हेतिला, से टेस्ट ऊपर हमें डिस्कस करबा आज। तो जो माने टेस्ट देइथिले एवं जो माने आगो को दबा को जन सब मोड डिस्कस कर दोची फ्लिप प्लेटफॉर्म रे। जो माने टेस्ट सीरीज नहीं नाहती समस्त टेस्ट सीरीज नबा को ट्राई करंतु। Even if you are not qualifying, or if you are thinking that you will not able to qualify, then also you will take you must take the test series and mentor, and it will help you basically to broaden your confidence, and for the next exam prepare within the next 3 months. Better for you start from now. So समस्त टेस्ट सीरीज नियंतु, टेस्ट सीरीज मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ये सब start करत। Critically evaluate the role of concurrent, critically evaluate the role of list in maintaining cooperative federalism. Critically evaluate the role of concurrent list in maintaining uh, cooperative cooperative. The concurrent list contained in 7th schedule of the Indian Constitution enumerate a subject on which the union state government can legislate. The union government and state government, it envisaged under Article 46 also बुझ कि concurrent list रूल कौन कि as you know 7th schedule रे हमर state list आगुटेला तीनटा लिस्ट अछि। तीनटा लिस्ट रु concurrent list जो थे both center and state can make laws, and case of overlap, in case of making law in a same issue, then central law will be so that is basically list and state list नाही ताको legislate करिया पई हमें रखाई जी। तो ये serve as a bridge between माने bridge between the centralizing and federal state, thereby promoting so cooperative federalism defines as horizontal relationship between center, state and local government. Role in maintaining cooperative shared legislative responsibility, subjects like education, forest, trade, union, and criminal law require joint effort. Subjects like education, forest, trade, uh, union, and criminal law require joint effort. Concurrent list ensure both level of government participation in policy, leading to the uniformity with flexibility. Okay, so good है कौन फर्स्ट है शेयर केमती कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड, चाहे एजुकेशन, फॉरेस्ट हो, ट्रेड हो, लो यार बेसिकली यूनियन लिस्ट हो, सेटा जॉइंट एफर्ट देबे ना।
तो बूथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट से पॉलिसी मेकिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबे जी चाहे एजुकेशन में डेवलप करिए करि परिबे सेंटर चाहे करि परिबे स्टेट चाहे ये गोटे फ्लेक्सिबिलिटी रहिला यूनिफॉर्मिटी रहिला थ्रू आउट द कंट्री देन कोऑर्डिनेशन इन द नेशनल इंटरेस्ट पई गोटे कोऑर्डिनेशन के सेंटर बेसिकली लॉ बनै परिबो स्टेट भी मध्य पावर रखि परिबो सच एज लॉज टू लोकल नीड्स इट इन डाइवर्सिटी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करिवे वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल then platform for policy dialogue forums like interstate council and Niti Aayog help coordinate policy implementation on concurrent subject reinforcing consultative federalism consultative by center state ଭିତର ଇଏ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗ यार बहुत बड़ रूल तो गोटे है कौन ना shared legislation coordination in national interest then कौन ना प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डायलॉग ये इंटरस्टेट काउंसिल हो गला या नीति आयोग ये जिते पॉलिसी गोटे बना हम या ता रिलेटेड केमती हम ये बेसिक खास करके कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट और कंसोलिडेटेड डिसीजन एंड चैलेंज डोमिनेंस ऑफ सेंटर under article 2 in case of conflict article 2 yes case of conflict law prevail जोटा कहूली चैलेंजेस क्रिटिसिजम तो यहीटा कि जिते गोटे सेम इश्यू रे कनफ्लिक्ट है माने सेंटर गोटे बनैला सेम प्रोविजन रे एजुकेशन उपरे मानि गोटे एजुकेशन सेंटर बन स्टेट भी सेम बट से केस रे यूनियन लॉ टा प्रिवेल ता माने कोन स्टेट रो ऑटोनॉमी टा रिड्यूस फ्रीक्वेंट सेंट्रल ओवररीच एक्सपांशन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट सो जे जार देखुच ये देखुच टिके ट्राई करो कि सो एक्सपांशन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट तो एक्सपांशन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट तो जी जहाँ लिखिच जो टेस्ट सीरीज रे जो मैंने लिखिच जो मैंने लिखिन ट्राई करो लिखिया एग्जांपल 42nd amendment 1970 has led to centralization especially in the area like education and forest centralization and implementation tension the overlapping jurisdiction can cause friction and administrative inefficiency weakening cooperative okay so गोटे है डोमिनेंस ऑफ द सेंटर जानी फ्रीक्वेंट सेंट्रल ओवररीच कनकरेंट लिस्ट सब 42nd अमेंडमेंट देख कि इंदिरा गांधी कौन कले किसी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट को जोटा कि एजुकेशन स्टेट लिस्ट आपनकर फॉरेस्ट स्टेट ये चाहिए आनिकी कनकरेंट लिस्ट को नहीं आइसले बट कथा कौन है कनकरेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट अच्छी सेटा सेंटर बनी पारिबो एंड स्टेट जदि भी सही सब्जेक्ट बनेला सेंट्रल लॉ टा प्रिवेल रही सेंट्रल लॉ प्रिवेल ऑब्वियसली जदि देखिबा हमें कि सेंट्रल यूनियन लिस्ट बेसिकली मोर पावरफुल देन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 ए अनुसार देखिबा इंट्रोड्यूस added article 2 say for concurrent taxation power removed state list sales tax तो 101 अमेंडमेंट एक्ट तुम जानिच जीएसटी ऊपर हेतिला सेइथर कोन हला आर्टिकल 246 ए होला सेइथर जो स्टेट लिस्ट हटे दिया गला ताको कनकरेंट पावर दिया गला टैक्सेशन पावर एटा भी टैक्स स्टेट रो सेल टैक्स एंट्री रु हटे दिया गला माने स्टेट लिस्ट जो सेल टैक्स थिला केवल स्टेट रो पावर थिला माने स्टेट रो पावर को कम हैला नहीं तो व्हाइल कनकरेंट लिस्ट a vital instrument of cooperative federalism ensuring collaboration and
a matter of shared concern and it is central dominance. Central dominance occasionally undermines the for the cooperative mechanism of consultation, coordination, and respect for the state autonomy. Then that very important. देखो आमे गोटे कथा कहलु कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केमति कंक्लूजन कोन हला नै कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेटी वेर आमे नेलु बट एट द सेम टाइम सेंट्रल डोमिनेंस को आमे एठी क्रिटिसाइज कर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देन कोन तार सॉल्यूशन कोन ना सॉल्यूशन हला कोन ना कंसल्टेटिव रहबा दरकार सॉल्यूशन कोन ना कोऑर्डिनेशन रहबा दरकार सॉल्यूशन कोन ना रेस्पेक्ट रहबा दरकार कर कोन रेस्पेक्ट कोन ऑटोनॉमी पाई स्टेट ऑटोनॉमी जोटा कि कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आमे रहू देखो स्टेट ऑटोनॉमी मस्ट बी देन क्लियर हेलो कार किसी डाउट अच्छी लेट मी नो एनी डाउट जी भी लाइव अच्छो जी भी देखुछ ओके तो आमे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंटेन पे कोन करूची এবং তার ক্রিটিক কোন তার and examine how the power the union and states under the Indian constitution distribute the power examine how power between the union and the state under the Indian constitution is also very distribution of power माने कौन फेडरल सिस्टम हमारा नॉर्मली इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस स्ट्रांग यूनिटरी बायस पावर डिस्ट्रीब्यूशन हेची काय 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट रु कनकरेंट लिस्ट एंड देन तुम्हारा स्टेट लिस्ट बाकी तुम देखिबो कनकरेंट लिस्ट भी आल्सो सेंटर डोमिनेंस यूनियन लिस्ट भी सेंटर डोमिनेंस ओके बट एटा कोन ऑटोनॉमी आउ ये जिनस बहुत सो बेसिकली कोन एटा नेशनल यूनिट को बैलेंस करूची आउ मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स सेंट्रल आउ यूनियन कनकरेंटली बेसी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट रो वेरी फ्यू सब्जेक्ट ओके सो आर्टिकल 7 शेड्यूल आर्टिकल 245 रो 25 ये भीतर तो देखिबा हमें तो किछ पॉजिटिव somehow एठी लेखियो पड़िबो सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश फेडरल सिस्टम strong unitary bias federal system strong unit distribution of power between the distribution of power between union and outlined in the 7 Indian constitution to balance unity with regional autonomy protecting India's diverse yet diverse and केसी होयर कहते इंडियन फेडरलिज्म इज ए क्वाजाई फेडरल माने नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी क्वाजाई फेडरल ए यूनियन ऑफ अनइक्वल पार्टनर्स माने सेंटर normally in the federal system comes from where which country is we follow for a federal system we follow from USA so USA रे follow करूचे USA हला water tight federal माने equal partners in the matter of center state relation जदि देखिबा more or less they are equal partners here there is unequal partner union of unequal partners that quasi federal ensuring unity union list 97 subject ओके डिफेंस हो फॉरेन अफेयर्स हो करेंसी तो सेंट्रल सब्जेक्ट कि नेशनल इंटीग्रिटी एंड ये कर एवं आ गोटे कथा रेसिडुअरी पावर आर्टिकल 2 वेरी इंपोर्टेंट रेसिडुअरी पावर इज आल्सो वेस्टेड विथ द पार्लियामेंट माने एमर्जिंग इश्यू जोटा कि आमे जीवन से भाभी न संविधान जो बनाई सब्जेक्ट गुड़ा बनाई यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट
से सब्जेक्ट से इश्यू से समय नथिला कोरोना इश्यू आसिला जेमिति साइबर सिक्यूरिटी आसिला जेमिति डिजिटल इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी ये इश्यू से नथिला जो नुआ इश्यू आसीबो जो एमर्जिंग इश्यू आसीबो से एमर्जिंग इश्यू रे पावर का हाथ रहिबो सेटा को रेसिडुअल पावर को आ जाए पावर इज विथ द पार्लियामेंट दैट इज द देन एमरजेंसी प्रोविजन भी अच्छी एमरजेंसी प्रोविजन की यूनिटी करिया पई ये कराउची तो एमरजेंसी पावर आर्टिकल 352 रु 360 नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी एंड और प्रेसिडेंट रूल एंड देन फाइनेंशियल एमरजेंसी ये तीनटा पाई परियो से सेतले जतले क्राइसिस हुए जतले स्टेट स्टेट भीतर सेंटर स्टेट भीतर प्रॉब्लम हुए लॉ एंड ऑर्डर इशू हुए सेतले चाहिले भी नेशनल एमरजेंसी थ्रू सिक्योरिटी एंड यूनिटी ओके देन पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट भी लॉ बनै परिबो Parliament can make laws in the state subject using Article 249, using Article 249, 50, and Parliament can legislate the national interest of the national can legislate in national interest or the state with state concern by promoting coordinated ये भी करिवे माने कोन देखो पार्लियामेंट चाहिए लॉ बनै परिबो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट बनै परिबो यही आर्टिकल यूज पार्लियामेंट चाहिए सेंट्रल लिस्ट तो पूरा बनइबो कनकरेंट लिस्ट भी बनइबो तो सेही में कहला नहीं फेडरल स्ट्रांग यूनिटरी स्ट्रांग यूनिट देन ensuring autonomy state list 59 subject state enjoy exclusive power over subjects of local importance state enjoy exclusive power over subjects of local importance like police public order agriculture ensuring administrative okay 59 subject state list state power exclusive ओके पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर हो कल्चर ये सब कनकरेंट लिस्ट से 52nd सब्जेक्ट अच्छी प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलाउइंग लेवल टू लेजिस्लेट एंड फ्लेक्सिबल 23rd and 74th amendment act कौन कला strengthen self government and enhancing grassroots तो एंड ऑटोनॉमी पाई एंड ऑटोनॉमी पाई ये देखिले एग्जाम केते केते इंपोर्टेंट हला कि अंडरस्टैंड करियो क्वेश्चन distribution of power in India presents dynamic balance between state and autonomy federation with centralizing tendency while center supremacy ensure cohesion state autonomy allows democratic diversity success balance depends on spirit of cooperation rather than pure constitutional here केमिति तुम्हें ये सब प्रैक्टिस करिया पड़ियो तुम बारंबार नॉट कम ओवरनाइट माइंड रो संगे संग आसीबन तापई तुमको डेली प्रैक्टिस करियो देन एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट इन डायरेक्टिव DPSP part 4 of the article 30 okay एथिको हमें थ्रो कोले काहे कि सो दैट यू विल द एग्जामिनर विल नो अरे एम कोन व्हाट इज द एम वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करियो कहा को गाइड करिवो DPSP प्रिंसिपल द डायरेक्टिव्स माने गाइडिंग प्रिंसिपल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट despite their significant state face several structural and financial political challenges in effectively implementing them. Here Ambedkar noted DPSP are the instrument of instruction. This is the instruction to the legislature and the executive.
The implementation of right to education, Article 2A, transformed a DPSP to a fundamental right. Implementation of right to education, Article 21A, transform a DPSP to right or wrong? Financial constraint. Many DPSPs such as universal education, Article 45, public health, Article 47, and livelihood, Article 49, require self-finance. Limited paisa, fiscal capacity, dependence on central grants, are stayed from full directive. Constitution, non-justice. Article 37. Hence, there is a implementation depend on political will rather than a enforceable mandate. सरकार को बाध्य केही करिपरि cannot force. It is the prerogative of the government. Then states often prioritize immediate populist scheme over long-term welfare subject due to electoral. The center-state imbalance, unequal revenue sharing, central dominance in policy formulation reduce the state ability to design and fund welfare program align with the DPSP. The Finance Commission recommendation and central scheme often constant state flexibility. Often constant state flexibility. Financial Commission how central state imbalance revenue sharing, administrative institution, lack of coordination among the department and bureaucratic inefficiency. The department with भी coordination, welfare delivery delay हुए, corruption and leakages in welfare scheme, realization of DPS, socio-political challenges, regional disparity, caste barrier, gender inequality make it difficult to achieve like equality, 39 uniformity across ହେଇପାରେ कि major काम होला कौन social and economic democracy and their realization by the state some can touch by financial how strengthening fiscal federalism, ensuring cooperative center state, enhancing administrative efficiency essential to transfer into and judicial review the cornerstone of the Indian Constitution. Judicial review the cornerstone of the Indian redressal mechanism. Judicial review refers to the power of judiciary. Judicial review refers to the power of judiciary to examine constitution of the legislative and executive action. So, इधर कौन अच्छी जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 136, आर्टिकल 226 कि तुम्हारा रिट and article 220. It forms the bedrock of the Indian Constitution. ये क्वेश्चन देखो जुडिशियल रिव्यू सब ओळे आसी वाला थरी बेस. Ensure that all organs of the government with act within their Justice SR Khanna करते कि judical review is the heart and very important point. केशवानंद भारती case 1973, Minerva Mill case 1980 reaffirmed that judicial review is part of basic structure of the constitution. Very important. Point is very important. देखो कुछ कहीं कि मार्क रो डिफरेंस आसे देखो यही इंट्रोडक्शन रे पूरा सब खोली के रखी देली. इंट्रोडक्शन रे I have given everything article related to it and तारो related the courts, okay, कौन करे काम करे करे एवं तार एग्जांपल
part of the basic. Able to do or not? What you need to write? This what you need to see. Shall be as a cornerstone. देखिवा गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहे जुडिशियल रिव्यू थ्रो रे से गार्डियनशिप करि परिबो तो जुडिशियल रिव्यू सेफगार्ड बेसिक्स as upheld in the case one of the case versus protect fundamental rights article 32 and 226 32 Supreme Court 220 High Court court ensure citizen right are not violated by orbit मनो इच्छा वायलेट करि परिबे नै मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया देन इट चेक करिवो एब्यूज ऑफ पावर गोटेला कोन ना गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बळे काम कला जुडिशियल एब्यूज करे सेकंड हला कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स थर्ड हला पावर को मिसयूज करवा को या एब्यूज ऑफ पावर को से चेक करिवो जुडिशियल रिव्यू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव review ensure accountability of the legislature and executive, preventing constitutional transgression, preventing transgression. Then federal dispute resolution, federal dispute, Supreme Court under Article 131, Supreme Court under Article 131, resolve dispute between and state. So कौन बुझी पाला नहीं guardian of the constitution ये point गुड़ा तुमको पाई very important and understanding the point and giving the facts very important for writing and you will get good marks. So check abuse of the power, federal dispute, maintaining constitutional balances and cooperative, criticism and limitation, and limit. First, judicial overview. Six argue that courts sometimes encroach upon the policy domain of the executive and legislature. Six argue कौन करती कोर्ट कौन करे एनक्रोच करे कि क्रिटिसाइज एटा हुए कि भाई आमे लेजिस्लेचर काम लॉ बनेबा मैं एटी सजेशन दबा दरकार यू आर द बेसिकली इंटरप्रेटर of the law interpret don't come our domain okay so जो separation of power अच्छे article 50 ताको undermine करूचन बोली criticize ताको आज judicial overreach very important point do then कौन ना delay and excessive review proceeding are often time consuming and expensive limiting access for ordinary citizens, limiting access, lack of accountability. Since judicial decisions are legally fine, largely judicial decisions are largely fine. Some may appear undemocratic. Some may appear undemocratic when courts override popularity. Elected institutions. Popularly elected institutions को override करिवो माने हबो नहीं so lack of account access चली कौन हम बहुत टाइम कंज्यूम वर्षे चली जाए 2 वर्ष चल जाए ऑर्डिनरी कौन ताको एक्सेस करबा पई पॉसिबल होई परिबे डिसीजन आज लार्जली फाइनल ताको अकाउंटेबिलिटी किछि नै सेटा को एन डेमोक्रेटिक लागे judicial review remains the cornerstone of Indian constitution by ensuring supremacy of the constitution and protection of the however its efficacy depends on judicial restraint balance respect for democratic thus while indispensable must operate the spirit of constitutional equality rather than
rather than judicial. Here guys, ओके सो ये थिला जुडिशियल रिव्यू ऊपर क्वेश्चन आसुची बारंबार सो जुडिशियल रिव्यू कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल that discuss the relevance of quasi federalism in India with reference to global federal model, reference to global federal model. Okay, so the relevance of quasi federalism, so quasi federalism आमे किसी समय पूर्व डिस्कशन करूथिले सेतले कहिथिले कि केसी होयर भी मजे कहिथिले यूनियन ऑफ अनइक्वल पार्टनर्स केसी होयर कहिथिले ये तांकर स्टेटमेंट थिला कि क्वाजाई फेडरल या इंडिया जोंडे कि कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करछि a federal government. It is not a federal, it is a federal in form but unitary in or strong unitary bias. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल स्टेट को चाहे जितना चाहे जितना एवं ए टर्म जो क्वाजाई फेडरलिज्म ए टर्म इज गिवन बाय ये एबे कहिथिले सर केसी होयर ये कहिथिले यूनियन ऑफ अनइक्वल पार्टनर्स देन व्हाइल ऑस्टिन कहिथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विथ ए स्ट्रांग यूनिटरी बायस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा जाइथिला कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 ये क्वाजाई फेडरलिज्म सेंट्रल लीडरशिप विथ स्टेट लेवल मोदी जी आसिले भाई और बहनों आज रात 8 बजे से आप लोग ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं जो जहां है घर में रुके रहे ओके फीचर ऑफ इंडियन क्वाजाई फीचर ऑफ इंडियन क्वाजाई इक्वल पॉलिटी division of power between union and states through the seventh schedule of ensuring federal okay कौन हला इक्वल पॉलिटी क्वाजी फेडरलिज्म माने पावर डिवीजन है यूनियन स्टेट सेवन schedule ensure federal structure strong center union is residuary power article 248 and emergency power article 352 build power toward the center ensuring national unity पहला कौन देखिल इक्वल पॉलिटी आ गोटे कौन देखिल स्ट्रांग सेंटर आमे देखिलु ऑलरेडी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट चाहिए स्टेट बाउंड्री अल्टर करि परिबो एनी टाइम हां देखि आगरु से फेडरेशन नथियो यूएस रे ही परिबोनी देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटी लाइक जैसे डुअल सिटीजन पाइबो जैसे रे डुअल सिटीजन इन इंडिया सिंगल सिटीजन so military bias can enforce then independent judiciary is also act as a arbiter of center state dispute federal balance then देखिबा ग्लोबल से क्लासिकल फेडरल स्ट्रांग भी स्टेट तो एटा को कहा जाय यूएसए रे
अनडेस्ट्रक्टिव यूनियन ऑफ अनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट इंडिया कह जाए कौन ना अनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिव स्टेट तो आमे चाहिए यूनियन को ब्रेक करि परिबु नाही बट वी कैन ब्रेक द स्टेट इन इंडिया बट इन यूएसए both सेंटर एंड स्टेट आर अनडेस्ट्रक्टिबल और इनडेस्ट्रक्टिबल जोटा कि ताको केबे आउ खत्म करि हो नाही सेथिबे स्टेट स्ट्रांग कनाडा रे क्वाजी फेडरल सेंट्रल डोमिनेंट इंडिया रे क्वाजी फेडरल रिजिड यूएसए रे पार्टली फ्लेक्सिबल 1979 1981 नु तांकर कॉन्स्टिट्यूशन हलानी यूएसए रे बट फ्लेक्सिबिलिटी सेमिति नाही मात्र 24 थर अमेंडमेंट है आमे 1947 रे हिची 1950 रे हिची कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली देखिवा बट आमार पाखापाखि 106 थर आमे एवं 130 थर ट्राई करि सल अमेंड करिया पई ट्राई करि सल ओडिसा री फेडरल ऑर्बिटर सरी सबले India's model is closer to Canada quasi federal balancing unity and regional diversity conclude करिवा India's quasi federalism is a pragmatic adaptation vast diversity political complex developmental unlike rigid federation such as USA India's flexible federalism ensure unity the crisis and autonomy जेमती कोविड है क्राइसिस थिला क्राइसिस समय यूनाइटेड आसिले समय ऑर्डर देले मोदी जी भाई बहन तो मेकिंग इट बोथ रेजिलिएंट एंड रेलिवेंट इन डायनामिक ओके डियर गाइस आर यू गेटिंग और नॉट so I think you might have understand ki how you can write the question so समस्त कहबी टेस्ट सीरीज इज कंपलसरी मस्ट what do you think committee are considered to be useful for parliamentary work why do you think they are considered to be useful for parliamentary work discuss in the context of the role of the there is a public there is a estimate committee there is a committee on public conduct तो ये तीन जो कमिटी अच्छी मेजर कमिटी आहरी बहुत सारा कमिटी अच्छी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी बट यही कमिटी एथिक्स कमिटी बट ये कमिटी तीन कमिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एस्टिमेट कमिटी ये एस्टिमेट कमिटी कौन ता पूर्व आम देखा कि कमिटी यूज पार्लियामेंट्री कमिटी बेसिकली गोटे छोटिया फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन ये कौन करे ना डिटेल स्टडी करे ओके एक्सपर्ट क्रूटनाइज करती स्टडी करती ना खाली डायरेक्ट आई पार्लियामेंट आसी हुआ हल्ला कले किसी लाभ ना ना यू स्टडी यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द इंडिया you are representing the people of India, it must be properly analyzed, must be detailed study, it must be expert, that it must be scrutinized expertly. Okay, so सेठी पई basically technical expertise ये सब फील्ड ताको करबा बहुत सेठी पई से कमिटी बहुत क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटेबिलिटी efficiency informed decision making in the legislative informed decision making in the legislature अरे बुझते पारिस या नहीं नहीं बुझते पारिस fullness of parliamentary committee detailed examination the committee examine bills the committee कौन कौन a bill examine करियो budget policy in depth कि feasible नहीं during journal debate specialized expertise जोटे कि constituency MPs अछंती with dominant knowledge हो एमपी डोमिनेट नॉलेज थी से टेक्निकल एक्सपर्टीज थाए ऑब्जेक्टिव कौन थाए ताको स्क्रूटिनी बाय पार्टीशन कंसेप्शन कंसेंसस माने कौन माने पॉलिटिकल प्रेशर रु फ्री थाए चला कमिटी जी की प्रेशर करती सेथिरे अपोजिशन पार्टी भी रहंती एमपी सेम पार्टी रहंती ओके तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हुए पॉलिटिकल प्रेशर रु बाहर रही की फ्री डिस्कशन पई सेठी गोटे रखा जाए across the party so by partition माने basically एटी पार्टी बेसिस रे एटी हुए then ensuring accountability ये चेक करे कि एग्जीक्यूटिव जो नउचदी काइना बेसिकली गवर्नमेंट जे थांदी से बिल बन बट से जो डिसीजन नउचन से फाइनेंशियली
वायबल अच्छी और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म सहित सी फॉलो करके काम करू अदरवाइज बिल बने देखिए एक्ट बने देबे पार्लियामेंट जाकि सॉरी सुप्रीम जाकि स्ट्रक डाउन कर दो या लोकों को एग्नेस्ट की फाइनेंशियली वायबल थी सब ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी their reports of the quality of the legislation and administrative reform and administrative के यूजफुलनेस देखले देन एस्टिमेट कमिटी रूल कोन एस्टिमेट कमिटी जोटे कि नॉर्मली की फाइनेंशियल जो कमिटी अछि मु कहली पब्लिक अकाउंट कमिटी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स देन ये सब बड़ कमिटी 30 जन मेंबर 30 जन जाक लोकसभा ओके बाकी दीटा फाइनेंशियल कमिटी लोकसभा और राज्यसभा एइथिरे 30 जाक ये बेसिकली पर्टिकुलर मिनिस्ट्री केते एक्सपेंडिचर हला इकोनॉमी एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ताऊपर मेंशन आउ कोन ना इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन पब्लिक स्पेंड होची नै मनी ठीक से अगर स्पेंड होची या जो ऑब्जेक्टिव हला ताको फुलफिल करी होची नै पॉलिसी रिफॉर्म की बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म केमती करी हबो गोटे एग्जांपल देखिए कमिटी हैज नोटेबल रिकमेंडेशन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म सोशल वेलफेयर स्कीम सब क्षेत्र में पार्लियामेंट्री कमिटी फाइनेंस फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन making them indistinguishable the parliament. They embody the principle of legislative oversight. The executive and that governance remains boosted. अरे भाई लोग तो लिखी पारियो ना नहीं आर यू एबल टू डू लाइक दिस और नॉट I know very difficult to replicate exactly the same word. You should not write the same word. But you need to understand the nature of the writing, the nature of the answer writing, the process of answer writing, the structure of answer writing. See, every question I am maintaining some kind of structure according to the question asked. There is an introduction which is giving the idea what we are going to write. And there is a body part which is asking, so yes, I have given. And third one is a rule of estimate committee. Okay, is and next I'll analyze the effectiveness of bicameralism. Yeah, especially in the context of bicameralism. This is the last question aji kariyo then ago ko au. So bicameralism refer to legislative with two houses. Bicamera. Cameralism कमरा को कमरा माने दीटा हाउस पर हाउस जानी थी बाइकैमरालिज्म केबे आस्थिला को एक्ट आस्थिला तो लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल राज्यसभा दे रिप्रेजेंट करे स्टेट्स the act as a council of state under the article 79 and the framework of constitution adopted bicameralism to ensure checks and balance federal representation and deliberative law making rule relevance checks and balance राज्यसभा प्रिवेंट करे मन इच्छा जल्दी जल्दी पास करी हेस्टी डिरेक्शन या डिबेट करें कहीं नॉर्मली लोकसभा जो मेजोरिटी था सरकार था ताले मन इच्छा बिल पास करी बिल बन देगी बिना डिस्कस बिल पास कर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसयूज करा जाय पारे चेक करे ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन जाइए गले वॉइस नेशनल लेजिस्लेचर स्टेट वाला जाएगी फेडरल पिंस कैंसर कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस बीइंग परमानेंट हाउस देखिए केबे डिसोल्यूशन देनी ये गोटे स्टेबिलिटी दिए कंटिन्यूटी दिए पॉलिसी एंड एक्सपर्टीज एंड डेलिब्रेशन राज्यसभा इंक्लूड एक्सपीरियंस यस actually ensuring legislative debate and improvement legislative federal rule Rajya Sabha power are not equal to Lok Sabha especially in the financial article reducing its effectiveness in protecting ओके तो फर्स्ट है कौन ना क्रिटिसिज्म वाला लिमिटेड फेडरल रूल राज्यसभा स्टेट रूल है बेसिकली
फाइनेंशियल मैटर यार किसी पॉलिटिकल पार्टीशन पार्टी डोमिनेंस एंड नॉमिनेशन बेस्ड ऑन द लॉयल्टी डाइल्यूट ये पार्टी तरफ आसती पार्टी काम ही obstructing tendency times Rajya Sabha is accused of delaying or backlogging the reform oriented members are elected by state legislatures not directly by citizens raising the concern about democratic Sabha has overall strengthened in ensuring making and however there is a its effectiveness depend on maintaining non-partisan deliberative spirit and genuine because bicameral in India remains but requires or function as a true chamber of the reflection rather than getting or not clear all of you. Then compare India's emergency provision article 350 federal emergency USA सहित and Canada सहित do these can or we can federal. So try करो समझते हैं we'll do next class रे हमें